So, hey everyone, welcome to the live stream. And today I will understand how I can work on CRUD operation in a MongoDB. Okay, so this session is completely for a beginner. If you are new in a MongoDB, you can still watch this live session because I'm I will explain myself and to you in a simple and easy manner. So if you are completely new, you still understand how the fundamental and things going on the back end. So let's start the session. Just wait a second. Is anybody can join? So we start this live streaming. So in today's live streaming, we will understand what is an operation in MongoDB and how we can perform that particular operation in our code base, in our database, how we can create, how we create many, read, update, delete. Okay, this is a basic crude operation. Okay, and this is a very important topic because if you are a front end developer and full stack developer, you need to know at least how we perform the crude operation because it mostly in mostly big applications this will perform operations will at least create and delete will be होता ही है. Okay. या श्योर ब्रो मैं हिंदी में बता सकता हूँ लेकिन द थिंग इज दिस लाइक कि मेरी ना इंग्लिश काफ़ी ख़राब है, ठीक है? सो आई चूज़ दिस लाइव स्ट्रीमिंग सो आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश एज वेल माई skills. Okay, so that's why I'm speaking in English. But if you are a completely beginner, you don't know, so I use the simple English word. Okay, so that's helpful for you. Okay, because I just if you are a new, so I have one thing for you. Okay, you need to remember if you are working as a tech and a career, the English is mandatory. Okay, it's not an optional. So if you, I can teach you in Hindi as well, but just remember you have to work on your English as well. Okay, my English is not so good. It's just like and काम चलाओ, but I'm still trying to improve my communication day by day. So I choose this path. Okay, so if you are comfortable with basic English, so you can still understand this concept. Okay, and I just already told you I have used this virtual code YouTube channel notes. So if you want to study the backend, you can. I prefer you. I don't know who is the person. I never meet him, but yeah, I follow their backend series and वो बहुत अच्छी है. या ठीक है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. सो चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम अभी एक फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर या अभी कोडिंग सीख रहे हो. सो हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे. मेरी अभी सिक्स स्ट्रीमिंग है. सो अभी जस्ट लाइक आई वांट टू बिल्ड एन ऑडियंस जिसके साथ मैं मिल के काम कर सकूँ, हम साथ में ग्रो हो सके. ओके, so this is a basic learn in public method. Okay, बाय द वे आपका शुभ नाम क्या होगा? T666 से बाकी. ओके लेट्स स्टार्ट सेशन. तो देखो, सबसे पहले इसको बिल्कुल बेसिक रखते हैं. हमने कल की लाइव स्ट्रीमिंग में वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ mongoose, हाउ टू क्रिएट schema, and how we perform the operation on model. And this is an, you can see how we connect our MongoDB database to our server so we can perform the operations. Okay, it is an the all performance will performing on the basis of root. Okay, अच्छा आप full stack developer सीख रहे हो. Bro, I'm also, I know the front end development and now I'm moving to the back end development. ठीक है,
So if you don't know good in front end and back end, so I just wait you watch a stream. This is an YouTube channel. This is a virtual code. Okay, I not promoted, but yeah, I study web development using this YouTube channel, and it's genuinely teach so good. Okay, you can simply to go the courses, and here you can see a web development courses. ठीक है, it's use the basic Hindi. You can easily understand each topic, and they just created every topic by level. Okay, so you don't need to frustrated कि मैं करूँ कैसे कैसे पढूं, इसलिए हर एक जैसे तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो उसके 10 लेवल बना रखे हैं, एक एक लेवल को कंप्लीट करते रहो, उसकी प्रैक्टिस उसके साथ प्रैक्टिस भी करा रखी है, और ये फ्री में है। सबसे पहली बात, मैंने एक पेड कोर्स भी ट्राई किया, लेकिन पेड कोर्स में मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो इस फ्री कोर्स में मिली है। फ्री कोर्स में मैंने ट्राई किया था जस्ट रैंडमली, और 2 महीने से अभी मैं इसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हूँ। तो मेरी फ्रंट एंड हो चुकी है, अभी मैं बैक एंड भी कर चुका हूँ, अभी बस मेरा मोंगो डीबी रिवाइज करना है, फिर ऑथेंटिकेशन के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा। ओके, बाय द वे मेरी वॉइस क्लियर है तुम्हें? तो भैया ओके, सो मतलब अगर तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो मेरे साथ क्या करो करो, मैं तो टॉपिक पढ़ ही रहा हूँ, उसके साथ साथ तुम भी पढ़ो, और रिवीजन के साथ साथ दोनों साथ रिवीजन करते हैं, दिस इज बेटर अप्रोच, क्योंकि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। ठीक है, तुम क्या बीटेक के हो बीसीए के हो ब्रो? क्योंकि देखो मैं तो अभी बीसीए का और मेरा फिफ्थ सेम चल रहा है, सो आई स्टिल जस्ट फाइनल ईयर है। सो अभी प्लेसमेंट पे ध्यान है मेरा, इसलिए मैं डेवलपमेंट थोड़ा अच्छे से सीख रहा हूँ। लास्ट टाइम भी सीखा था, इंटरव्यू वगैरह भी दिए दो चार जगह, लेकिन वो ये स्टाइपेंड अच्छा नहीं दे रहे, वो कम दे रहे हैं, लो दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया और सोचा थोड़ा स्किल्स को और इन्हेंस किया जाए, ताकि बाद में और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, आप डिलीवरी लाइव करते हो? वॉइस थोड़ी डिले है, मे बी इस टाइम पे वाईफाई मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, जैसा जैसा कि मैं देख रहा हूँ ना, ड्रॉप फ्रेम ना 48% हो रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, केबीएस भी कम है। इस प्रॉब्लम का फिक्स कैसे करूँ यार? वाईफाई वाले को मैंने बिल्कुल प्यार से समझाया उसको मैंने कि हाँ यार तू थोड़ा ठीक करवा दे यार, मतलब क्यों और जिस टाइम मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा उस टाइम पे ज़्यादा होता है। फ्री टाइम में अगर मैं कभी सपोज़ नहीं, मैं थोड़ा वेब सीरीज़ देख लूँ अगर एक एपिसोड का, तो उस समय एकदम मक्खन चलता है, और जब स्ट्रीमिंग पे जाऊँ तो यार इतना स्लो चलता है। बीसीए चल रही है फर्स्ट ईयर में। ओके ब्रो, तुम तो मेरे ही ब्रो मैं भी बीसीए कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके, तो अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो ना, तो अभी तो टाइम है वैसे। बीसीए 3 साल की होती है, ठीक है, बहुत जल्दी निकल जाएंगी, मेरी तरह गलती मत करना। अभी से अपनी ग्रिप बना के रखना, मतलब दिन के 3-4 घंटे पढ़ो, और पढ़ते रहो, ठीक है। ट्यूटोरियल में ज़्यादा मत फंसना, मैं ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ। तब जाके अभी मैं थोड़ा खुद से भी कोड करता हूँ ना, ट्यूटोरियल में देखो और कोड करो ना, ईजिली है। ट्यूटोरियल से हट के कोड करो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें एक्चुअली में कितना आता है ना? चलो, बाकी बातचीत काफ़ी हो गई, अब थोड़ा लाइव चलते हैं एंड समझते हैं कि आज मैंने क्या रिवाइज किया, ठीक है। बाकी तुम बताओ यार, थोड़ा थोड़ी बहुत तो इंग्लिश यार ट्राई करनी चाहिए तुम्हें भी। मेरी तो वैसे थोड़ी खराब है, लेकिन आई जस्ट इम्प्रूविंग। हम्म। बाय द वे तुम मुझे क्या बताओ, क्या तुम भी वही पर्सन हो मेरी तरह जिसको इंग्लिश समझ तो आती है, लेकिन बोलने में वो अटकता है, उसे प्रॉब्लम आती है? क्या अगर तुम हो तो ओके या यस करो। क्या तुम भी मेरी तरह वही हो जिसको इंग्लिश समझ आती है, लेकिन बोलते समय बहुत अटकता है?
मेरी आवाज़ आ रही है एंड जस्ट लाइक मुझे थोड़ा बताओ यार कि तुम अगर तुम्हारी भी इंग्लिश खराब है या तुम भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हो व्हेन इट्स टाइम टू स्पीक। हम्म। हाँ सेम भैया देखा, क्योंकि ना ये प्रॉब्लम ना, इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार इंग्लिश में। पता है मैंने अभी लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था कंपनी में एंड मैं फर्स्ट राउंड तक गया, सेकंड राउंड तक गया, थर्ड राउंड में मेरा क्लियर भी हो गया। ठीक है यार, आखिरी में ना फिर वहाँ जब स्क्रीनिंग हुई वहाँ पे यार मैं कम्युनिकेशन, मतलब आई फील कि खाली स्किल सब कुछ नहीं है। ठीक है, स्किल्स के साथ तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अगर तुम्हारे बहुत अच्छे एवरेज है, तुम्हारी स्किल बिल्कुल लो पे है, कम्युनिकेशन तुम्हारे अच्छे है ना, तो एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा हो जाएगा। जिसकी स्किल भले अच्छी हो लेकिन उसको कम्युनिकेशन नहीं आती, कम्युनिकेशन की मतलब ना के बराबर है तो। ठीक है। ओके। So without any delay, first thing, let's start the session. 12 minutes, it's already gone. Okay. So here is our note. Okay. So last session we already understand how to create a schema. ठीक है. And schema is just nothing. It's just like a blueprint. You just created a blank form where can user fill it and it will be stored in the database. Okay. So you're just creating a design. Like Google Form होता है, Google Form में तुम जैसे डिजाइन नहीं करते कि क्या क्या यूजर की डिटेल चाहिए, जस्ट सिंपल लाइक स्कीमा। ठीक है, बेसिक स्कीमा है। सपोज हम एज अ स्टूडेंट, एज अ यूजर तुम्हें हो तो तुम्हें कहीं साइन अप करना है, तो विच डिटेल जो तुमसे मांगता है, दिस इज अ नेम। सपोज इट इज एन इंस्टाग्राम, इट्स टेक योर नेम, your date of birth, not age, date of birth, and it is an email, your email address, and your username, and maybe phone number as well. But we don't need so many. If you understand this basic, you know how what is an schema actually is. Okay, and this is a model. You just simply create a variable const user and you just use the mongos dot model. What is mongos is the nothing. We have, this is a library of node.js and mongodb, so we can interact with database easily. Okay, so we just write the mongos dot model, and this like model we have to pass the two argument there. Okay, the first is the variable where you can store the model, and the second is your schema. ठीक है, just you just need to write these two argument in there and your model will also create it. ठीक है, this is in your schema, this is an model, and this model is in that file. If we want to use in another file, we have to export this particular file into another, so we already write the export default user there, so we can easily import in that particular file. ठीक है, and this file is nothing, it's a server file where we have created our server. ठीक है, so okay bro, okay. Okay, so we just created our server there. ठीक है, so how we can create our server? So let's create a new server again so I can remember and understand it clearly. ठीक है, so it is an our, where is our server? Here it is. ठीक है,
We just write the server. This is a basic variable we create here. Const server is equal to my express. ठीक है? So express is nothing. Express is a Node.js library. So we can use the Node.js simply and easy structured manner. Okay. So we just assign the variable here and express.js. Here there are all the modules in the server. Okay, so we just import it in server so we can perform all the operation on this particular variable. So we just write the server and dot get method is used to get the data from the server. ठीक है? And there is a routing. So routing, just think, route is a dynamically changes. जस्ट लाइक कि सपोज करो तुम्हारे ना राउटिंग जो है ना, राउटिंग के एड्रेस पे तुम्हारा डिसाइड होगा कि तुम्हारा कौन सा पेज लोड होगा. ठीक है? तो दैट इज राउटिंग एंड दिस इज आवर होम पेज रिस्पॉन्स. ठीक है? जस्ट लाइक कि मैं तुम्हें इसे कट कर देता हूँ एंड कट करने के बाद ना मैं सर्वर दोबारा रन करके देखता हूँ. दिस इज आवर MongoDB. डोंट नीड टू राइट दिस. ओके, so just let's check the port number there. So our the server is running on port number 5555. So we just go on that directory, cd database. That is our folder, and just enter. And the next we just write the command npm run. Okay, so you can see the output will in console log the server is run on port number and the database is connected successfully. Okay, so we can also also revise it again how we can connect the database as well. Okay, so we just write the local host and the port number. The port number is 5555 and we can simply enter, and you can see that this is our home page. Okay, and here you can see that this is our home page. It is successfully worked. Now we just create another route. So we just write the server and use the get method. Dot get method is just nothing. जैसे HTTP मेथड होते हैं ना, तो HTTP में होते हैं 3 4 से 5 मेथड. जस्ट लाइक गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, डिलीट होता है, पैच होता है, पुट होता है. ये बेसिक मेथड होते हैं, तुम इस नोट से समझ सकते हो. ठीक है? बेसिक चीज होती है. तो गेट मेथड की हमें ना गेट करना है सर्वर से, या और ये रिस्पॉन्स है कि हमें क्या रिस्पॉन्स भेजना है. रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट मतलब डेटा लेना, रिस्पॉन्स मतलब डेटा देना, जो कि हम कॉल बैक में साइन करते हैं. कॉल बैक हमारा होता है वो बताते हैं. जैसे ये हमारा न्यू है. ठीक है? इससे बेसिक न्यू न्यू करके हमारा न्यू रूट है, राउट. एंड here we define our callback. It's take two argument, request and response. And here we create an arrow function and just write the response dot send, and we just write uh, this is our new route. Okay, this is our new route, and we just simply go on there, hash, and write the new. You can see this is our route. ठीक है? On route hash new, and that just simply click on enter and you can see that this is our new route. So our server is successfully created, and on this route the server will print this particular data and output whatever you would say. Okay, एक second, let me check. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं भैया. जैसे हम राउट परफॉर्म कैसे चेक करते हैं? मेरा अभी प्रोजेक्ट बहुत लोड आ रहा है, एपीआई से ये पता नहीं पड़ रहा कौन सी एपीआई एंड पॉइंट से आ रही है. ठीक है? तो देखो, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जितना मैं जानता हूँ जो डेव टूल्स होते हैं ना उन्हीं में चेक करना होता है. बाकी अभी मैं उतनी फास्ट परफॉर्मेंस पे गया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है तुमने एपीआई बिल्ड करी है ना. अभी अभी मैंने एपीआई बिल्ड करना सीखी नहीं है. बाकी इतना तो पता है कि डेटा फेच करते हैं, सिंपली वही है. या ये रेस्ट एपीआई का टॉपिक है थोड़ा, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग.
So now let's connect our MongoDB to our server. ठीक है? It is a very basic code. You don't need to just like कि how connect the हम database से connect कर रहे हैं किसको backend के साथ database से connect कर रहे हैं. It's not difficult. It's an easy. Here you can see the const mongo.url. You can see the simply a URL, and this URL is you can get from simply go on your MongoDB. MongoDB at last, it is a cloud storage where you can store the data, retrieve the data, change the data, everything here. But is a free trial, they get give only 512 MB storage. Okay, and this is an efficient if this is sufficient if you are learning, not production ready storage. It's very low. Okay, check this one. How does it look like? What should I need to check? Let's click on cluster. So we can log in first. What? ओके ओके साइन इन हो रहा है ठीक है I J K elip check this one how does it look like bro I can't understand what's the question you asking to me or someone okay okay just plug in my okay so here is our MongoDB at last you can create your cluster easily it's not a super science super rocket science you can simply go on YouTube and ask to chat GPT how to set up MongoDB at last okay once you created your cluster just click on connect button and here you can see many options atlas sql mongodb for vs code currently I'm using mongodb for vs code whenever you click on this you receive your vs code link you have received a link you just need to copy and go on first I can minimize this screen okay so you just simply click on this and you receive your link here okay and you here you can need to just write in password and id and thing ठीक है your link is stored in that particular variable you just need to write an arrow function you can also write a simple function as well mongodb this is our variable name and we just use the async if we perform any operation like fetch the data update the data change the data it will take time okay and you know the javascript is synchronous language okay so we use async so whenever we have received the data so we can access it otherwise it will show undefined okay so we just write the mongoose dot connect mongo dot url okay no problem we just remove this code and write it again okay okay I have a question that we not should not await we can actually we need to write await here
Okay, so now it's coded. Now this code is correctly exactly. We just simply use the try. Try is just like first run this code. If the code is not running, it should be. It's matlab always it will be a given error. So catch will detect that error, error print and print there. So we can handle the error and fix the problem. Okay. So now we just simply go on where okay. So now just understand the code. This is an await, async, await. We just need to write mongos dot connect, and here we can pass the URL, and your database is connected, but not connected because you have created a function. So first you need to call this function in that listen port. Okay, that is a listen port where your server is running. The best practice is always write this code in the bottom. Okay, you can see the server is run on the port number 55 and the database is connected successfully. So our database is connected successfully. Okay, the internet connection is literally fucked up यार. कितना टाइम लग रहा है, क्या होगा फिर? 59% तक ड्रॉप रेट, फ्रेम गिर चुका है यार. क्या ही क्वालिटी आ रही होगी, फट चुका होगा बिल्कुल. Is my screen visible or not? Is my screen visible? The voice quality is okay or not? So you could just simply the thumbs up and okay and yes, no. You can understand it. Becoming a creator is literally so difficult if you just do the mistake again and again. I'm the बस गलती करे जा रहा है. इंग्लिश कैसी कैसी हो रखी है, just trying कर रहे हैं, just try कर रहे हैं. Let's try so fucking hard. And let's just perform our first operation. Okay, we use already how many much time? 28 minutes is already gone. Okay, so let's go on there. This is an introduction to MongoDB operation. Okay, operation is nothing just like create, read, update, and delete. So first thing we have create, we have sent the data to a database. Okay, so we using the create method. So let's create a method. Just delete this entire code and start from scratch. Okay, I read it because I don't remember it, but yeah, just I know how to exactly it's built. Let's create it. Okay, first thing we write the server dot and host because we have sent the data. We don't need to use get method, and here we need to write the route. Okay, and the last is already created, so हम यहाँ पे लिख लेते हैं build लिख लेते हैं. It's also same thing है ना, create and build. And here we write the async, and the callback is request dot response, and here is an arrow function. We just need to take a request from body. Okay, you can also see you here we write the const server is equal to me express. It is an not this server dot use express dot json. It is a middleware that is just basically convert the JSON body data into a object, JavaScript object, so we can perform operation easily. Okay, so let's go on here na. So we just write simply use the method. Try catch is a good practice. Okay, so we just write the try, and here we write first thing we access the name. So we create a variable name const name, or name is request dot. How we if we create using a destructing method na, it is an also a good thing ना. एक एक वेरिएबल को डिफाइन करते रहो. नेम, फिर एज क्या था, एज ईमेल यूजर.
age, email, username. Okay, so just like request dot body. Okay, so in this code, what will happen? If we send any request to the root number build, the data will come from request.body and it will stored in according to the variable names. Okay, so let's create. Okay, so what should we do? We just need to write a, you can already access it, है ना? So we just need to print. So we create a user dot. Hmm. First thing we need to create a new user. Hmm. तो क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? जैसे हम असाइन करेंगे यहाँ पे कैसे? लेट यूजर इज इक्वल टू में request dot body dot user. Just like it's a correct or wrong code because I don't think it is necessary if we use a destructor. Mm, type all data from server and just like where can create. Okay, so we use the destructing method now. So all data is already created. So we just create a new user, await user dot create. Okay, so we don't need to write this lengthy code. We can simply use this destructing method, and now we just cons will make the value constant. So we use the let. It should be change. Okay, so we just create a let new user. It is a basic variable. You can write what anything and just write the user. You can see that we import the user from dot model dot user dot model dot js. Okay, so now just okay user and user dot connect, and in connect we can just simply assign the name. Okay, age. Okay, and email, email and username. Okay, this is a new user. Okay, spelling mistake name. ठीक है. Response dot status. If they successfully created, we use the 201 status and set the JSON
Mm-hmm. Message user created. Okay, okay. We need to write this code in curly brackets. Message and user executed successfully. Okay. And here we catch the error. So we just simply write the let, no need to write return response dot status 400 for an error, and just write JSON and write a message error. Okay. Mhm. Okay. And we can also write there response dot JSON and write and pass the new user here. Okay. So the server is run on port number there. The database is connected successfully. Okay. So let's create our first user. Okay. So let's create our first user. Just go on Thunder client. Okay. It's an extension you can see and write the Thunder. This is an icon. You can see Thunder client. Just download, sign up. Don't need to sign up. Here is an port number. We just write the our URL. Need just copy and paste. And we have to use the build. Okay, so use the build there. And now just we go on put and a put. We post not put. Put is just used to an update particular data. And right now we just send and create a data. Okay, so we just create a variable name and write the name is Raju. Okay, and next is an age would age is 20 32 जो भी है लिख दिया ठीक है okay and email it should be raju123@gmail.com and okay I just understand we can't use the await there so it should be print undefined. Okay, I just remember. Okay, now it's correct code. Okay, according to me, maybe it give an error. And username it will be username is penguin. Penguin आजकल बड़ा famous चल रहा है. Let's send the data, and you can see it will give a message. And message it show an error. Let's check. Okay, अब समझना पड़ेगा कि बैड रिक्वेस्ट क्यों आई है. यहाँ तो सब कुछ ठीक है. Okay, let's debug this code. Hmm. Why it's give me an empty object?
So we are back. Internet connection is working. I'm just busy because I have to receive a call. It's also an urgent, so I need it. Okay. So in last we have see our code is running successfully. Okay. Hmm. Our code is running successfully and our user is created in a MongoDB and you can see all. Okay. And let's create an another one. Okay. Again, just go on localhost. You need to push. You can also send the request through your page, but for performing this operation, we need to create a front end page and it will take time. So that's why I use the simple method localhost. It's a localhost thunder method. What I'm saying that's like I'm just saying कि अभी मैं thunder use कर रहा हूँ. This is an extension. It's also work. It's for practice. Okay. Okay. So now let's read the data. Okay. Simply we just go and create method that where we can read the data. So we just simply click on search dot name. Okay. Async dot await. Try let user and await dot user dot find one. Okay. We have already created one. Okay. We just go on there and write search and no need to name. This name is just like Raju. And just enter. You can see the output will be printed there. Okay. Name Raju. Name Raju. Okay. And you just first thing, understand this code, this particular block of code. So why we can easily access the user with just like 4 to 5 line of code. In there, we just create a server and get method is used to get the method, get the data from that part, and we define our route there. ठीक है? If we use the search की जगह कुछ और लिख देते and this is double colon we have used this is an param. Okay, after this bracket, okay, a user that write can anything it will be treated as a search, it will be dynamically. Okay, so dynamically value we can take from name dot require dot param dot name. So in this variable we can take this data and this find one is an operation method. You can see this is already defined find one. This is a find one read find one. Okay, it is in syntax, so we just simply write the user dot find one and pass the value in this variable and response dot status dot json dot user. Okay, status user उसमें भेज दिया. ठीक है, response dot status dot उसमें json में भेज दिया. In this we also created but we have sent the message not variable. If we create the variable there so we can access it as well. Okay, let's find all. How we can access all the database value from that one code. So let's write this code. We just simply go there and we don't need to write. No, why we break this code? We just create another one. No? Just write the server dot get and all get all root. ठीक है, this is a basic get all and here we write the async callback
request dot response and taking a const user and just write, now it's already a username. Okay, usernames लिख लेते हैं and just write the what is the syntax of read all find by id. This is for read one data, find all we use the user dot find. Okay, so we just write the user dot find. Okay, and just on there and response dot dot status. Hmm, I think we should need to write this code in try try catch and just paste the code there using the await status. It will be 20 because we have used the range between 200 to 300 if our code is successfully run. And okay, let's go on dot json and paint our usernames there, and otherwise it will show me an error. The error it will be a response return. We have to return the return dot response. It would be a 400 and json will send me a message error dot status. Let's go on this route and see what data we can find. Okay, so here we get the all the data from a database using this find. Find means just like we have to read all the data. Okay, all the data that will be stored in that particular user schema. And the next is read only one. We can use or we can do already this. And now next is update one document. ठीक है, अपडेट वन डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं, राजू को आप करेंगे हम शाम, ठीक है, राजू को शाम करेंगे, नहीं तो बाबू भैया करते हैं। ओके, राजू को शाम, नहीं तो रामू भैया करेंगे। बताओ क्या नाम रखे, बताओ। राजू नाम था, राजू से क्या चेंज करूँ मैं उसको, बताओ। बताओ भाई बताओ, कमेंट कर दो, तुम्हारा नाम ही रख देता हूँ मैं, चेंज ही करना है बस। ओके चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे and it's already created. We just simply comment this code and write again. Okay, just create a server dot put. We use the put method. Put method, why we use the put method? Because it is a good practice. We can also perform this operation using get method. But when the http which when the http is already given a method of put push, so why we use this create the, and here we just write the id. We can use the id now. Okay, id and name as well. So id is already assigned, so we can create using name. Okay, and here we just write the async function. Async function is, and yeah, callback is like request comma response and const, and just we have already syntax there. Okay, so just like const user const id, and we can take the id from
request dot bod body dot param. Okay. So whatever the user write the name there, it will be stored in that particular variable. So we just write the name request dot params. Now we need to write the params, not body, because we already in root now. So whatever the user write, it will stored in the body. So request body dot name. Okay, let's perform the operation. Let's create a let. Why we forget? We need to use this code and try catch. Okay, let user and just write the schema name and dot update one है ना, update one, and let's pass the argument update one है ना, update one document. So we just simply write the comma can all the data that will be stored in that particular user schema. And the next is so find one, write the await because response will take time. Await user dot